Hello everyone, good morning all of you. I hope you are fine. Today we are starting with the previous year questions of class 12th. Now today our first question, which statement is true for the Gauss law? Then our first unit, electrostatic, potential and capacitor. Then here we are starting some questions of the electrostatic. First topic about related to the electric field and the Gauss law. Now this statement is true for the Gauss law. First you should know about their Gauss law. Gauss law होता क्या है? Okay, this one is telling about your electric flux. What is Gauss theorem? That is explaining about the electric flux. Okay, electric flux. Flux means your group of your field lines. Which field lines? Electric field lines. Clear? Electric flux is telling us about the total electric field lines passing through an enclosed surface. So how much flux will be there through closed surface? Then phi equal to your E dot ds. How we can find mathematically that phi equal to E dot ds? There is a dot product between them. Then E is a electric field and D is our curved surface area, and between them dot product, then it will give us your flux. This one flux by using your definition of the electric flux. Now we are doing here Gauss law. Which one statement about Gauss law? Gauss law also telling us about their total flux through any closed surface. But this one is not according to Gauss law. According to Gauss law, total flux, Gauss law is here telling us about your total flux passing through any closed surface. It will be equal to your Q enclosed. What is the meaning of Q enclosed? Total charge enclosed any surface, then total field lines passing through this one total charge, then it is known as your flux. For example, your Q minus Q1, Q2 like this one, these charges are available inside the surface, and let here Q3 charge is outside the surface. So here total, we can apply this one law, those charges which are available inside the closed surface, जो charge इसके अंदर lie करते, then we will apply Gauss law on that charges. So inside this one here lie your Q1 and Q2. So total charge we can write their Q1 and Q2 divided by your epsilon naught. Okay. So here by using this one, here we can find their total flux. Which one is outside? Then this one we will exclude here. जो चार्ज इसके बाहर लाई कर रहा है Gauss theorem क्लोज सरफेस के बाहर लाई कर रहा है जो चार्ज, then we will not include this one charge. We will take those charges which are available inside the closed surface only. So this one our Gauss theorem, Q equal phi equal to Q by epsilon naught. Total enclosed charged by your epsilon naught, then it will be your Gauss law. Okay, so in our that electrostatic beta, there are the two formula of electric flux. One is by using definition of the electric flux. By using definition, then we can use their phi equal to E dot ds, and second one flux we can find by using your Gauss law. Clear? Then for applying this one law, then first all charges should be in a closed surface, and this closed surface we are calling it Gaussian surface. What? Gaussian surface. What is Gaussian surface? Gaussian surface, but it is the imaginary surface. It is the imaginary surface which we are imaging out of the charge particle. Okay, कि हम Gauss law apply करने के लिए, Gauss law अप्लाई करने के लिए हमें क्या है, सभी चार्जेस को एक सरफेस के अंदर एज्यूम करना पड़ता है, और जिस सरफेस को हम क्या कहते हैं, गॉसियन सरफेस कहते हैं. सो गॉसियन सरफेस इज आवर इमेजिनरी सरफेस विच वी आर इमेजिन फॉर अप्लाई देयर Gauss law. So phi equal to Q by epsilon naught is a total flux passing through any closed surface due to those charges which are available inside the surface. Okay, now see which one statement is true for the Gauss law. This one question came in our 2022 PYQ. Okay, so here which one statement is true? Now first read this one. All charges whether inside or outside the Gaussian surface contribute to the electric flux. मैंने अभी बताया बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए contribute वही चार्ज करेंगे जो Gaussian surface के अंदर लाई करेंगे. Which are outside the surface, then these are not will अवेलेबल फॉर दिस वन Gauss law. ओके, हम जो चार्ज इसके बाहर लाई करेंगे उन चार्जेस को इंक्लूड नहीं करते इस लॉ के अंदर, वही इंक्लूड करते हैं जो सरफेस के अंदर लाई करते हैं. सो दिस वन इज आवर रॉन्ग स्टेटमेंट. ऑल चार्जेस आर नॉट
contribute for this one? Contribute only those charges which are inside the closed surface. Now second, electric flux depends on the geometry of the Gaussian surface. ये कह रहे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, जो हम ये फ्लक्स फाई हम फाइंड कर रहे हैं, क्या ये डिपेंड करता है हमारी गॉसियन सरफेस की ज्योमेट्री पे? ज्योमेट्री, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ज्योमेट्री? ज्योमेट्री मींस शेप एंड साइज. शेप एंड साइज, क्या इसकी उस पर डिपेंड करता है ये? It is a depend upon shape and size of the Gaussian surface? No, it is not depend upon shape and size. सिर्फ just condition क्या होती है कि बेटा चार्ज क्या होना चाहिए? सरफेस के अंदर होना चाहिए, चाहे शेप कैसी भी हो, स्फेरिकल शेप हो, आपकी सर्कुलर शेप हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, any arbitrary shape doesn't depend upon their geometry of this surface. Only just depend all charge should be inside the surface or not. Okay, just we have to check this one. Next condition, this, so this one B also wrong statement, A also our wrong statement. Now C, Gauss theorem can be applied to a non-uniform electric field. Gauss theorem क्या applicable होते हैं non-uniform electric field? No, Gaussian surface is applied to the, there depend upon the charge particle beta here. Okay, also depend upon the uniform, maybe non-uniform, that or not condition always should be there, non-uniform. Now here electric field, this also a wrong statement. Now electric field over the Gaussian surface remain continuous and uniform at every point. Yes, electric field over the Gaussian surface means यहाँ पे electric field किसकी वजह से होगा? जो चार्ज अंदर लाई कर रहे हैं. Clear? Those charges which are lie inside the surface, then due to this one electric field will be available, and this electric field always will be continuous and a uniform at every point. Okay, so this one is a right statement about the Gauss law. So I hope you understood beta what is Gauss law related to this one. You can solve this one question. All questions should be depend upon this one formula, and this formula is Q equal to phi equal to Q by epsilon naught, and Q will be total charge enclosed in our closed surface. जो चार्ज बाहर होंगे then we will exclude that charge particle, जो अंदर होंगे हम उन्हीं को include करेंगे, वही हमारे पास क्या है फ्लक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे. जो आउटर साइड है that we will not include for this one, and जो चार्ज हम जो सरफेस हम assume करते हैं to enclose the charge particle, that surface is our Gaussian surface, and Gaussian is our imaginary surface. Beta doesn't depend upon the geometry of the this one surface, means इसके shape और size पे depend नहीं करती कि छोटी surface है, बड़ी surface है, कैसी surface है. Just these all charges should be inside the surface only, and this surface is known as the Gaussian surface. और ये Gaussian surface कैसी रहती है? Remain continuous. ये नहीं कि एक बार start हो गया field, एक बार finish हो गया, एक बार फिर से start हो गया, नहीं. Charge है तो बेटा field will be continuous through this one Gaussian surface, and it will be uniform at every point. Uniform रहेगा हर एक point पे. So this one D will be right statement for this question. Now see next question. Here, which of the diagram correctly represent the electric field between two charged plates if a neutral conductor is placed between the plates? Here in this one beta, this one your PYQ of 2022. Here two plates are given. One is this one is this one. Two plates are given. One is positively charged and one is negatively charged. Upon one plate beta is visible, then positively charged, and downward here negatively positive, negative, positive, negative. And here field lines are given between these plates. So you have to just check. Then out of these four pictures, then which one is a right field lines? Okay, here two parallel plates, one is positive and one is negative, and between these parallel plate kept a neutral body. Here kept neutral conductor. Here given a neutral conductor. It's okay. Same amount of the positive or negative charge particle that is kept between these plates. So you have to check which one is a right picture according to which one are the following the right property of the field lines. तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए बेटा आपको फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए. व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द फील्ड लाइंस? व्हाट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? Clear? If you know these properties, then only you can solve this question, otherwise you can't. Okay, so properties क्या कहती है कि then electric field lines always will generate from the positive charge and go toward the negative. So direction of the field lines positive to negative. What?
पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ आती है. नाउ सेकंड, ऑलवेज विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस. जो फील्ड लाइंस होती है बेटा जिस भी सरफेस से निकलेगी हमेशा क्या रहती है, परपेंडिकुलर रहेगी. अगर आपकी कर्व सरफेस है देन आल्सो अलोंग दिस वन टेंजेंटली, देन लाइक दिस वन कर्व सरफेस इज देयर, देन फील्ड लाइंस विल बी like this one, okay, perpendicular on this one, and straight line will be there, charge particle, then field lines will be go like this one. अगर ये positively charged particle है तो outward direction में इस तरीके से perpendicular. Clear? So follow this one, always should be perpendicular on this one surface. Now next one property, that they will be continuously, if they are coming out from positive then it will be go toward the negative continuously, ये नहीं कि बीच में आपके stop हो जाएगी, stop हो के फिर से restart हो रही, no, it will be continuous only. But we can't say that it is a closed loop, no, it will not form always closed loop, but it will form continuous, okay, it will be continuous from positive to negative but can't be form closed loop. Magnetic field lines हमेशा closed loop form करती है बेटा, electric field lines closed loop form नहीं करती. Okay, so next property, never be intersect with each other, never be intersect with each other, never be intersect with each other. Okay, means एक field lines कभी भी दूसरी field lines को cut नहीं करेगी, always will be separate. Okay, why they will not cut? Because they will cut on a one point, then from one point their two tangent will be formed there, and that is impossible कि एक point से हम दो tangent नहीं निकाल सकते. Tangent line means which are perpendicular to the radius. Okay, perpendicular with the radius in your radial field, then we will call it tangent line. तो एक पॉइंट से हम दो टेंजेंट नहीं निकाल सकते, दैट्स व्हाई देयर विल बी नेवर बी इंटरसेक्ट विद ईच अदर. Okay, now see here following this property. Now first see positive to negative. Now positive से negative तो निकल रही है, but क्या ये perpendicular है? Second property मैंने क्या बताई कि perpendicular रहेगी हमेशा सरफेस के, जिस सरफेस से भी फील्ड लाइंस निकलेगी वो हमेशा क्या रहेगी, परपेंडिकुलर. सो दिस वन सरफेस देन इट इज नॉट परपेंडिकुलर विद इट, इसके परपेंडिकुलर नहीं है. सो दिस वन इज रॉन्ग. ओके, वी कांट से इट इज राइट क्योंकि परपेंडिकुलर ही नहीं है. नाउ सी हियर पॉजिटिव नेगेटिव. अब देखो ये परपेंडिकुलर तो है, इट इज राइट दिस वन, बट हियर न्यूट्रल कंडक्टर आल्सो विल बी देयर, तो न्यूट्रल की वजह से भी तो फील्ड लाइंस जाएगी यहाँ से. Okay, so this also here wrong because there is a note given about their neutral conductor. Now see here this one, C completely wrong. I think you can understood this one, these field lines going on this one, but electric field lines always will go from positive to negative. क्या direction होनी चाहिए, positive to negative. So it is completely wrong. Now D option, now here field lines emerging out like this one way, but due to this one field they will be effect like this one. Okay, effect like this one, from here they will be emerging, then positive से इसके अंदर जाएगी और positive से negative इसके अंदर जाएगी. So D will be right option using this one. So learn your property of field lines properly beta, then depends on this property also can be given different diagram, then you have to check which one is right according to property of the field lines. So this one also a 2022 question. Now next question, see, electric dipole placed in a non-uniform electric field can experience. When we are keeping any dipole in a electric field, then what happened? Electric field we are applying there, here this one electric field. Clear? I think you have done this derivation beta already. Any dipole we are keeping, this one important derivation for your CBSE. Any dipole we are keeping in a electric field that is making any angle theta with the field lines, these are the our field lines. इस field lines के अंदर क्या रखा हमने, dipole रखा. Dipole means having two equal magnitude charges but opposite sign. Okay, one is positive, for example this one 3 coulomb, then another charge also should be minus 3 coulomb with some gap, then we can call it dipole. Dipole means two pole, di, two pole
having two poles, okay, positive negative. So एक pole positive, second pole negative should be there, and both charges should be in equal magnitude, then having some distance, then we can call it this one here dipole. Okay, क्या होता है dipole कि जिसके अंदर दो इक्वल अमाउंट की मैग्नीट्यूड हो, अपोजिट डायरेक्शन हो, पॉजिटिव और अदर क्या हो नेगेटिव हो, उस डिस्टेंस पे रखे तो उसको हम क्या कहते थे, डाइपोल कह देते हैं. क्लियर. तो इसकी स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए जिस टर्म का हम यूज करते हैं दैट इज हियर नोन एज डाइपोल मोमेंट. व्हाट? डाइपोल मोमेंट. डाइपोल मोमेंट क्या होती है? What is dipole moment? Dipole moment is tell us the strength of the electric dipole. Electric dipole just a construction. क्या है? सिर्फ दो चार्ज हमने कुछ गैप पे रखे इक्वल मैग्नीट्यूड के, उनको हम क्या बोल देंगे? इट्स डाइपोल. ओके, उस डाइपोल की वैल्यू फाइंड करने के लिए, स्ट्रेंथ फाइंड करने के लिए, मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हम जिस फैक्टर का यूज करते हैं दैट इज योर डाइपोल मोमेंट. ओके, कि उसकी स्ट्रेंथ क्या, कि दो चार्ज को हम इतने गैप पे रख रहे, देन व्हाट इज द स्ट्रेंथ ड्यू टू दिस चार्ज पार्टिकल विद दिस गैप, दैट इज डाइपोल मोमेंट, जिसको हम P सिंबल से डिनोट करते हैं. इट इज आवर वेक्टर क्वांटिटी. कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी. एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल वेक्टर क्वांटिटी मींस हैविंग डायरेक्शन. क्लियर. तो कीप इन माइंड बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा फील्ड लाइन से अपोजिट होती है. फील्ड लाइंस कैसे पास करती है? इलेक्ट्रिक फील्ड हियर पॉजिटिव टू नेगेटिव. ओके, बट योर डाइपोल विल बी नेगेटिव टू पॉजिटिव. फील्ड लाइंस क्या होती है? पॉजिटिव टू negative. Field lines positive to negative, but your dipole moment will be negative to positive. Negative to positive. Dipole moment always negative से positive की तरफ होती है. Clear? So here dipole place. Now as we are keeping this one, अब देखो इधर से इधर जा रही, means here something positivity, here something negativity, because lines will go positive negative. So here we can say some positive is there, here some negative is there. That's why going on. क्लियर. इसके अंदर ऐसे हमने क्या रखा हुआ है? पॉजिटिव, दिस वन डाइपोल. नाउ दिस वन पॉजिटिव, वी आर टेकिंग दिस वन नेगेटिव. नाउ ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज देन फोर्स विल एक्सपीरियंस इन विच डायरेक्शन? टुवर्ड नेगेटिव साइड. पॉजिटिव चार्ज किधर लगाएगा? नेगेटिव की तरफ फोर्स लगाएगा. ओके, हियर वी कैन राइट देयर एफ नेगेटिव. नेगेटिव चार्ज किधर जाएगा? पॉजिटिव की तरफ जाएगा. सो हियर वी कैन राइट देयर F पॉजिटिव फोर्स वी आर एज्यूमिंग. क्लियर कि डाइपोल के दोनों पोल के ऊपर क्या फोर्स लग रहा है? एक इधर फोर्स लग रहा है, एक इधर फोर्स लग रहा है. सो एज वी नो अबाउट दिस वन, देयर फोर्स विल बी as any charge keeping in a electric field, then force experience on it that is equal to your QE. What is the force? QE. Now here also this one force is equal to, we can write there QE, because uniform only, this one your uniform field. What? Uniform. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या है कि आपका चार्ज भी क्या है? सेम है, सेम मैग्नीट्यूड है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है. तो एक का फोर्स इधर लगा, एक का फोर्स इधर लगा, अगर हम टोटल फोर्स निकालेंगे देन इट विल बी कैंसल आउट. एफ पॉजिटिव, एफ नेगेटिव, देन इट विल बी सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन. दैट्स व्हाई टोटल फोर्स विल बी इक्वल टू योर व्हाट? 0. क्लियर. जहां तक आपने इसकी डेरिवेशन की होगी तो डेरिवेशन के अंदर टॉर्क भी निकाला होगा बेटा. टाउ क्या होता है? दैट इज योर आर क्रॉस एफ. क्लियर. दिस इज आर क्रॉस एफ. टाउ आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स आल्सो वेक्टर क्वांटिटी. सो व्हेन यू सोल्व दिस वन देन हियर विल बिकेम योर दिस वन योर टाउ इक्वल टू योर P E sin theta. When you solved this one tau, then it came your P E sin theta. Okay. सो दिस वन फॉर योर यूनिफॉर्म. अब देखो यहाँ पे पूछ रहे इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म. नॉन यूनिफॉर्म का मीनिंग है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? कहीं ज्यादा है, कहीं कम है. वी कांट से इट इज सेम. सो अगर ये सेम नहीं होगा तो क्या फोर्स सेम होगा? नो. देन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो विल बी डिफरेंट. फॉर द नॉन यूनिफॉर्म देन वी कैन से फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देन वी कैन से नॉन यूनिफॉर्म के लिए क्या हो जाएगा? F नेगेटिव इक्वल टू योर F नेगेटिव इक्वल टू QE1, एंड फॉर योर F पॉजिटिव देन वी कैन राइट देयर QE2. चार्ज तो सेम है हमारे, डाइपोल इज देयर, सेम मैग्नीट्यूड, बट फील्ड क्या आपका नॉन यूनिफॉर्म है, वेरी कर रहा है. यहाँ कुछ फील्ड है तो यहाँ कुछ फील्ड है, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? डिफरेंट होगा. सो टोटल वी कैन फाइंड देयर टोटल फील्ड, देन F1 माइनस योर F2, देन वी कांट से इट विल बी रिमेन योर सेम, FE1 माइनस योर E2.
क्लियर है, हम सेम नहीं कह सकते, दैट्स व्हाई वी कैन राइट देयर एफ इज नॉट इक्वल टू योर 0. क्लियर, अब ये नॉट इक्वल टू 0, देन टॉर्क वी विल फाइंड, देन आल्सो इट विल बी योर value, some value will come because torque equal to r cross f, then f value we will put here, some value will be there, then your r is your this one. So here now electric dipole placed in your non-uniform can experience which one, a force but a not torque. No, force also will be act as well as torque also will be there. Now torque is there but not force. No, this also not possible. Now always a force and a torque, there will be force as well as the torque. Force भी लगेगा, torque भी लगेगा, both will be act there. So C will be right option because we solved na beta force is not 0 in case of the non-uniform motion. So I hope you understood this one question. Now see our next question. Now here two conducting sphere carrying a charges Q1 and Q2 are kept with their centers r distance apart. Okay, now here this one your two conducting sphere, अभी कह रहा है two conducting sphere जिनके ऊपर चार्ज क्या है Q1 और Q2, both are kept with the distance centers are apart. Magnitude of the electrostatic force between them is not exactly this one because why, ये कह रहा है कि two conducting sphere are there, two conducting sphere, one is this one, second is this one, on this one charge is Q1 and on this one charge is Q2, are kept with their centers r distance. Centers is a distance given, वो क्या है आपका r given है. Clear? So magnitude of the electrostatic force is not exactly is equal to this one. ये कह रहा है कि जो electrostatic force लग रहा है k q1 q2 by your r square, this only capital Q है, then we can use their capital Q. Clear? So here we can write it k q1 Q2 divided by your r square. Clear? This one is our force. Now force is this one. ये कह रहा है कि ये जो magnitude है, it is not exactly equal to this one. Not exactly this one. So why? Because there is no point charge. Charge distribution on the sphere is not uniform. We can't take this one because your charge distribution is a non-uniform sphere. Next will be told बेटा अगर दो चार्ज रखेंगे तो उनमें क्या लगेगा, फोर्स तो लगता ही है. Clear? Can be attractive, can be repulsive. So force will be act between them, but we can't say this one because their charge distribution will be a non-uniform. Their ये condition होती है बेटा Coulomb क्या होते हैं, Coulomb's law always will be act on the point charges. अगर हम point charge इनको assume कर लेते हैं, then force we can say, but this one also charge distribution of the sphere is non-uniform, then also we can't apply this one. Non-uniform अगर तब भी हम ये नहीं कह सकते k q1 q2 by r square. There should be a uniform distribution, so there should be a B will be right option of this one, and remaining is telling us about the force. Force will be act on them. Now see next question. A negatively charged object X is repelled by the another charged object Y. Then here negatively charged object X is our negatively charged, X particle क्या हमारा negative charge है. Now repelled by the another charged object Y. Y के ऊपर charge नहीं दे रखा, Y is not having there. Then Y is our another charged particle. What is this? Y is our another charged particle. However, then object Z is attracted by the Y. Z क्या है, इसको attract कर रहा है, क्या कर रहा है, attract कर रहा है. Now this one repel. अब X और Y क्या कर रहे हैं, repel कर रहे हैं. Clear? और Z क्या कर रहा है, इसको repel ये इसको repel कर रहा है, और Y और Z क्या कर रहे हैं, attract कर रहे हैं. Now which of the following is the most possibility for the object Z? तो ये कह रहा है कि Z के लिए मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या रहेगी, क्या Z पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, या न्यूट्रल रहेगा और पॉजिटिवली भी रहेगा, और न्यूट्रल और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल भी रहेगा. सो आउट ऑफ दीज फोर यू हैव टू चेक. Now how we can check? First you should know about their property of the charge particle. Positive क्या करेंगे, repel, negative repel, and opposite charges will be attract with each other. Just you have to follow this property only of the charge. Okay, so following this property, now check it. What is the position of their Z? कि Z आपका क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा, न्यूट्रल. We have to check this one.
ओके नाउ अब देखो ये इसको रिपेल कर रहा है, x इज रिपेलिंग y, x y को रिपेल कर रहा है, मींस दोनों के ऊपर क्या रहेगा, सेम चार्ज, सेम पोलैरिटी। ओके अगर इसके ऊपर नेगेटिव है देन दिस आल्सो शुड बी अ नेगेटिव, बोथ आर सेम पोलैरिटी ना, तभी रिपेल कर रहा है। अगर यहाँ नेगेटिव इन योर क्वेश्चन गिवन नेगेटिवली चार्ज x नेगेटिव देन y शुड बी नेगेटिव, बोथ आर नेगेटिव, सो बोथ आर नेगेटिव देन z आल्सो विल बी अ पॉजिटिव और नेगेटिव, क्या रहेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अब ये कह रहा है कि z इसको क्या कर रहा है, अट्रैक्टेड टू दी y, z इसको अट्रैक्ट कर रहा है, अट्रैक्ट कब करेगा, अपोजिट पोलैरिटी, अपोजिट पोल होंगे तभी क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। सो हियर कमिंग योर नेगेटिव देन z शुड बी योर पॉजिटिव, क्या होगा, पॉजिटिव। और वी कैन से न्यूट्रल आल्सो, वी कैन से न्यूट्रल आल्सो बिकॉज न्यूट्रल आल्सो लेस देन this one charge, more than this one, here negative something and your neutral means having there some more another charges with respect to this one. So here we can say positive, not only positively charged, not only negatively charged, can be neutral and can be positively charged, then it can be attracted by the y particle. Okay, next here d neutral negative, no, it always will be positive only क्योंकि y क्या आपका negative और z should be a positive and can be neutral also. So C will be right option of this one question. This one here 22 question, 22 here. Now next question we will see question number 6. Now magnitude of the electric field, magnitude of the electric field due to the point charge is 2q. Magnitude of the electric field due to the point charge 2q. Okay, at the distance r is e, क्या distance आपका r distance है, is e, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कह रहा है, पॉइंट चार्ज। अब हमारे पास पॉइंट चार्ज क्या है, 2q है। ओके पॉइंट चार्ज इज दिस वन एंड ऑन दिस वन चार्ज इज वैल्यू 2q एंड इज r डिस्टेंस, किस डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे है। क्लियर, तो इज इलेक्ट्रिक फील्ड आपका, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है ऑलरेडी e, E इक्वल टू, सो पॉइंट चार्ज की वजह से सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, हमें फील्ड पता होना चाहिए ड्यू टू द पॉइंट चार्ज व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो वी नो अबाउट दिस वन, ड्यू टू पॉइंट चार्जेस, ड्यू टू पॉइंट चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू KQ by your R square. Okay, this is the electric field due to the point charge. अब यहाँ पे point charge क्या गिवन हमें, 2q गिवन है। क्लियर, तो 2q गिवन है तो हम क्या लिख देंगे, E इक्वल टू, E ऑलरेडी गिवन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज हमारा ये है तो E क्या हो जाएगा, K 2q by your distance is your R square. Now first one equation we can write in first line, according to first line we can write equation E, this one. Now see next, then the magnitude of the electric field due to the uniformly charged thin spherical cell of radius is R with total charge Q at a distance R by 2. I hope you understood बेटा। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, किस कंडीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, लेट वी आर टेकिंग दिस वन इलेक्ट्रिक फील्ड हियर E डैश, क्या निकालना हमें, E डैश निकालना है। किस कंडीशन पे निकालना है कि हमारा जो टोटल चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से, यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल की वजह से। ओके, थिन स्फेरिकल सेल की वजह से जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा निकालना, तो कैसे निकलेगा, थिन स्फेरिकल सेल, इसकी रेडियस क्या गिवन है R, और स्मॉल r is your more than your capital R. Okay, and your R distance given your R by 2. Clear? So with total this one we can write there E dash for it, then we can write there K, charge given here Q, and your distance given here R by 2. Clear? ये आ गया। बट हमें ऑप्शन में क्या चाहिए, E की फॉर्म में चाहिए ना बेटा। आपके ऑप्शंस क्या है, इन फॉर्म ऑफ E। ओके, और जो E किसके इक्वल है, वो E इसके इक्वल है। क्लियर, सो वी हैव टू कंपेयर दिस वन E विद इट दिस E डैश के साथ इसको कंपेयर करना पड़ेगा। देन KQ by your स्क्वायर विल बी देयर ना, R स्क्वायर पॉइंट चार्ज के लिए क्या आता है, R स्क्वायर, सो हियर R स्क्वायर, देन इट विल बी 2 to 4, देन 4 वी कैन राइट हियर, आ जाएगा 4 अपना इधर। सो हियर वी कैन राइट देयर KQ by your R square. Now came here, now we can write this one 2K into here 2Q divide by your R square. ये आ जाएगा। Clear? Now here this one we can write this one E dash, we can write this one. Now this one factor can we write there E,
This one factor can we write there E? See here, E equal to your K2Q by R square. So this one factor we can write there E. Now E dash can we write there by using this one 2 as it is. Now this one we can write there E. तो हमारे पास E dash क्या आ गया? 2E. E dash equal to your double of the electric field. So here we can write there 2E. I hope you understood beta this one question. According to this one line, magnitude of electric field due to point charge, we can write this one. Then we have to find out electric field due to the uniformly charged thin spherical cell on which charge distributed Q और किस distance पे निकालना आपको R/2 पे. Just we use this one information here in same formula here for the cell. For cell electric field we can write this one. Then for the comparison with it, that's why we will open this one, and this one term we can write equal to E. So E dash will be equal to your 2E only. So our right option will be equal to 2E just. Now next question, a square sheet of the side A is lying parallel to the XY plane at the Z equal to your A. Here this one your 3D X, Y and Z. Okay, 3 plane we are assuming X, Y and Z. Okay, this one your X, Y and Z. X, Y and Z. क्लियर? इसमें से एक स्क्वायर शीट है जिसकी साइड क्या आपकी A, साइड गिवन ऑलरेडी. A is lying parallel to the XY plane. This one plane is our XY plane. कैसा प्लेन है ये? XY प्लेन है. इसके पैरेलल में with this one with parallel to the XY plane at Z equal to A, along Z. Z के along क्या है? A side पे. Now this one here A. Let we are assuming this one here A only. This one is parallel to the XY plane. Okay. Then the electric field in the region E equal to your CZ square K cap. Clear? Here electric field in the region E vector equal to CZ square K cap. It is vector form. Then electric flux through the sheet you have to find out. Okay, in first question beta I told you how you can find their flux. There is a 2 method to find flux. One is here by using definition. Electric flux is our scalar quantity. Okay, scalar quantity E dot ds. E also vector quantity, ds also here aerial vector, ds is our aerial vector. This one also vector quantity, and dot product will give us scalar only, so phi is our scalar quantity. Flux through, now one is this one and second is phi equal to q by epsilon naught, this one by using Gauss theorem. हमारे पास फ्लक्स निकालने के लिए दो रिलेशन होते हैं बेटा. वन इज बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सेकंड बाय यूजिंग योर गॉस लॉ. सो गॉस लॉ वी कांट यूज बिकॉज़ यहाँ चार्ज गिवन नहीं है. अब आपको दो में से ये चेक करना पड़ेगा कि दो में से कौन सा फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो. बिकॉज हियर दिस वन फ्लक्स वी आर यूजिंग बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड दिस वन वी कैन फाइंड देयर गॉस थ्योरम. बट क्या इस क्वेश्चन में चार्ज कहीं गिवन है? नो, चार्ज गिवन ही नहीं है. चार्ज गिवन नहीं है, देन वी कांट अप्लाई दिस वन. जस्ट वी हैव टू गिवन योर इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है तो हम विच फॉर्मूला वी कैन यूज देयर? दिस वन, phi equal to E dot ds. Okay, so by using this one formula then we can write there by using definition of electric flux, then phi equal to E dot ds. Okay, E हमारे पास गिवन है, phi equal to E क्या गिवन है आपके पास? C Z square your K cap. Yes, और Z की वैल्यू भी ऑलरेडी गिवन है, Z इक्वल टू A. नाउ डॉट प्रोडक्ट, व्हाट? डॉट प्रोडक्ट. क्लियर? E डॉट ds, ds इज आवर एरियल वेक्टर, एरिया परपेंडिकुलर फॉर्म विद दिस वन. ओके, जो एक्स वाई के लॉन्ग है, जो आपका एरियल वेक्टर है बेटा, दिस वन रिमेंबर ऑलवेज दिस इज योर ds इज योर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑलवेज. दिस वन इज योर perpendicular to the surface. What is ds? ds is our aerial vector. Aerial vector क्या बोलते हैं इसको? aerial vector, that is always perpendicular to the given surface. ये चीज याद रखना बेटा, that is your important term to find any question.
देन ds जो है जो हमारी वेक्टर फॉर्म है इसकी डायरेक्शन हमेशा जो सरफेस गिवन होती है उसके परपेंडिकुलर गिवन होती है। तो सरफेस कैसी गिवन आपकी पैरेलल टू दी xy के पैरेलल, तो xy के पैरेलल है तो उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट किधर जाएगा, z के अलोंग। ये xy के पैरेलल है तो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट किधर जाएगा, z के अलोंग। क्लियर। तो हमारा जो ds की जो डायरेक्शन होगी वो किसके अलोंग होगी, k कैप के अलोंग। क्लियर। और एरिया क्या हो जाएगा स्क्वायर का, साइड इनटू साइड, सो वी कैन राइट देयर a square your k cap. I hope you understood beta. Aerial vector means always perpendicular to the given surface, so k will be perpendicular to it, then a square k cap. Now k cap dot k cap same vector. Now z value already given, z is equal to your a only, so 5 we can write there c a square dot your a square. Clear. And here k cap dot your k cap. Clear. Now we know about this one, dot product of two same vectors k dot k, then it will be always 1. Okay, what 1, k dot k 1, I dot I 1, j dot j 1. So here it will be equal to your 1 only. So here left phi equal to what, left phi equal to your what, this one your c only, c e raised to power 4. It will be total flux. Now check answer which one is right. A only right, but this one here a raised to power 4 and c this one is right option. This remaining will be your wrong only. So A will be right using this one. I hope you understood better flux definition. Just you have to check if charge given, then use their Gauss law for find flux. If your field given, then use their definition of the electric flux. Two formula only in our syllabus of the flux. Out of these two, you have to check which one we can use there according to our question requirement. Okay. Now see our next question. Now we will read our next question. 8th. A point charge is situated at the distance r from a short electric dipole on its axis. एक point charge है kept at a distance r from the short electric dipole on its axis. Clear? And experience of force. A short dipole. Short dipole means beta we can neglect their distance from the dipole. Okay. So here we can write their q and minus q same dipole and kept a point charges. एक point charge given है at a r distance from the short dipole. From here we are measuring this one distance from the center. Derivation you had na? These are important derivation beta. Electric field due to dipole on axial, equatorial. Okay, solve these derivation. उसी डेरिवेशन के फॉर्मूले पे आपका एक क्वेश्चन बेस्ड है कि पॉइंट चार्ज इज सिचुएटेड एट द डिस्टेंस आर फ्रॉम द डाइपोल ऑन इट्स एक्सिस. एक्सिस मींस जो एक्सिस इसके अलोंग, डाइपोल के एक्सिस के अलोंग, एनीवेयर वी आर अज्यूमिंग दिस वन पॉइंट क्यू चार्ज. एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स, कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, क्यू फोर्स अप्लाई कर रहा है. अब क्यू फोर्स, एफ फोर्स, इसकी वजह से पॉइंट पे कितना फोर्स लग रहा है, एफ फोर्स लग रहा है. क्लियर. देन इफ द डिस्टेंस ऑफ द चार्ज इज 2r, अगर डिस्टेंस को डबल कर दिया जाए, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फोर्स ऑन इट. ओके. अब हमने तो क्या निकाला था, डाइपोल की वजह से उसके एक्सिस के ऊपर फील्ड निकाला था, ना कि फोर्स. रिमेंबर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल दैट इज इक्वल टू योर, रिमेंबर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू point charge due to dipole due to dipole short dipole. Question में given a short dipole, that's why we will apply condition of short only, short dipole. Okay, due to short dipole. और कहाँ बता रही है, on its axis. चार्ज कहाँ given है आपके, इसकी एक्सिस पे given है, on its axis. Clear? So this one electric field we can write there 2kp by rq. Okay, ये भी याद रखना बेटा, कई बार ये भी पूछ लेते, that is how is a depend upon the r. Okay, तो electric field due to dipole on axial, it is a depend upon inversely proportional to the 1 by rq. ओके, पोटेंशियल कैसे डिपेंड करता है, 1 by r स्क्वायर. पोटेंशियल के अंदर एक पावर कम हो जाती है, r की इसके अंदर 3 रहती है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिपेंड करता है, इसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ r एंड पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द r स्क्वायर. नाउ हियर दिस वन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द शॉर्ट डाइपोल ऑन इट्स एक्सिस इक्वल टू दिस वन.
अब ये कह रहा है फोर्स गिवन है। अब फोर्स गिवन, हमने डेरिवेशन में क्या निकाला, फील्ड निकाला था, बट वी कैन फाइंड ओके द डाइपोल के अंदर अगर फोर्स निकाला देन वी कांट यूज अप्लाई देयर गोस लॉ, सॉरी कुलाम्स लॉ। वहां पे हम कुलाम्स लॉ अप्लाई नहीं करते फोर्स अप्लाई करने के लिए कि के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, बिकॉज देयर इज नॉट पॉइंट चार्ज। वहां कंडीशन होती है कुलाम्स लॉ कब अप्लाई होता है, जब आपके चार्जेस पॉइंट हो, शॉर्ट स्मॉल चार्जेज हो। बट यहाँ तो डाइपोल गिवन है, तो डाइपोल के अंदर फोर्स निकालने के लिए पहले हमें फील्ड निकालना पड़ेगा। यूजिंग दिस फील्ड देन वी कैन फाइंड फोर्स, बिकॉज एज वी नो दैट रिलेशन बिटवीन देम फोर्स एंड फील्ड, एज वी नो E equal to F upon Q. So F we can write there QE. ऐसे हम क्या निकाल सकते हैं, फोर्स निकाल सकते हैं। तो हमारे पास E ये आ रखा है, देन मल्टीप्लाई दिस वन विद Q, देन इट विल बी इक्वल टू फोर्स ओनली। नाउ हियर आपको गिवन है कि इनिशियली योर डाइपोल गिवन, देन फोर्स हाउ वी कैन राइट इट, फोर्स कैसे निकालेंगे, यहाँ फोर्स निकाल सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग फोर्स क्या हो जाएगा आपका, given already this one force F equal to Q charge we are assuming Q and here E आपको given है 2K P by your RQ। ये हमारे पास क्या होगा, given force, given already this one F, so F we can write according to condition this one। अब ये कह रहा है कि then distance of the charges is here 2r। if distance of the charges we are increasing 2r, then how it will be affected there, चार्ज इज डिस्टेंस, जो चार्ज हमने इससे रखा था डाइपोल से, उसका डिस्टेंस हमने बढ़ा दिया, 2r कर दिया r की बजाय, तो इसमें क्या चेंज आएगा, तो यहाँ पे r की वैल्यू हम f डैश ले सकते हैं, कि हमें क्या निकालना है, f डैश निकालना है। फोर्स जो हम निकाल रहे हैं वो क्या अज्यूम करें, f डैश, तो f डैश हमारा क्या हो जाएगा, सेम फॉर्मूला F इक्वल टू QE, तो f डैश क्या हो जाएगा, Q E डैश वी कैन राइट देयर, Q E डैश क्या हो जाएगा, 2K, K is your electrostatic constant, P is dipole moment, it will be remain same क्योंकि डाइपोल में कोई चेंज नहीं हो रहा, just change the distance of the point charge from the dipole, और वो कितना हो रहा है आपका 2r, how much 2r, clear? So Q into 2kp by your r square। Now this one your F dash, so when we will solve this one then it will be square of the 2, then it will be 8, so F dash equal to your Q into your 2k p by your 8 r cube। Now see this one value is equal to r or f or not, 2k q by your r cube, 2k q by your r cube, yes, this one we can write there f only, so f dash क्या आ जाएगा हमारे पास, equal to your f by 8, क्योंकि ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई, f के इक्वल। ओके, आफ्टर कंपैरिजन दिस वन विद दिस, देन दिस वी कैन राइट देयर f, क्योंकि हमें जो आंसर्स चाहिए बेटा वो f की फॉर्म में चाहिए, सो f की फॉर्म में चाहिए तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, f by 8, so f dash we can write there f by 8 only, so which one is right option, your f by 8, this one will be B is right option। Okay, this year just come in year 2023 only beta, so see these all are your important PYQ, try to solve these question yourself also। Okay, so f by 8, this one will be right option। Now next question, see the magnitude of the electric field due to the point charges object, the magnitude of the electric field due to the point charge object at a distance is equal to 4 meter, which distance given, here 4 meter distance given, and here distance given here 4 meter is your 9 Newton per coulomb। magnitude of electric field आपका क्या given है, due to point object of at the distance 4 meter is 9 Newton per coulomb। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड गिवन, क्या क्या गिवन आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है और आपको क्या गिवन है, डिस्टेंस गिवन, कि इस डिस्टेंस के ऊपर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो लग रहा है पॉइंट चार्ज की वजह से वो क्या लग रहा है आपका 9 न्यूटन पर कूलम। अभी कह रहा है फ्रॉम दी सेम चार्ज वी आर टेकिंग देयर ऑब्जेक्ट, देन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द मैग्नीट्यूड 16 न्यूटन पर कूलम विल बी एट अ डिस्टेंस ऑफ, so we have to find out this distance। how we can find this distance? Now here we can write first equation, here we can write there F electric field due to point charge कितना होता है, अभी जस्ट बताया था मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज K Q by R square,
क्लियर. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी कैन राइट दिस गिवन कंडीशन. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या गिवन, पॉइंट चार्ज की वजह से आपको गिवन ऑलरेडी 9 इक्वल टू के charge is here q only we are keeping because both cases your same charge, that's why we can write there q only, divide by your r square. R is given in this case here 4 meter. First beta, when you will solve any question then check there all units are given in SI or not. सभी units SI में given है कि नहीं given है. If any given in CGS then first convert into SI unit. Okay, then start solving this one. Now 4 given in meter, then 4 4 ja square of the 4, then we can write there 16. Now here first equation came according to first line. Now from the same charge object, now q only we are assume there q only just q, then electric field of the magnitude is 16. Electric field क्या given है, 16 given है. तो कह रहा है क्या distance, what will be distance of this one for the same charges, then electric field becomes here 16 Newton per coulomb. क्लियर कि उसी पॉइंट चार्ज की वजह से अगर हम 4 मीटर का डिस्टेंस रख रहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हमारे पास 9 है. ये कह रहा है कि अगर 16 कर दिया जाए इस इलेक्ट्रिक फील्ड को तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा. सो अगेन वी कैन अप्लाई देयर ई डैश इक्वल टू के क्यू, सेम चार्ज हियर आर डैश स्क्वायर, हियर वी आर आर डैश या r1 वी कैन टेक इट, r1 ले लेते हैं इसको. ओके, डैश में कंफ्यूज हो जाओगे, 12 हो जाएगा. r1 स्क्वायर, तो हमें क्या निकालना है, r1 क्या निकालना, हमें इस डिस्टेंस को हमने क्या एज्यूम किया, r1. दिस वी हैव टू फाइंड आउट. तो हमारे पास ई डैश ऑलरेडी गिवन है, क्या कह रहा है 16 न्यूटन पर कूलम एंड के क्यू बाय यर r1 स्क्वायर. दिस वन यर सेकंड इक्वेशन. क्लियर, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन. नाउ केम दिस वन, we have to find out this one. So how we can find? I think you can do it by using this one first and second equation. Then as we will take our ratio of this equation, then we can find their r1. Okay, so how we can find first and second? As we are taking ratio of this equation, then here we can write their 9 k q by 16, and now just second equation your 16 divide by your k q by your r1 square. Clear? As we are dividing these both equation, then q same charges given a question, same charges, assume q only, so same charges we can cancel out k q. Then here we can write this one here came 9 by 16 and equal to your r1 we can write here upper side and divide by your 16 only. I hope you understood better this one. After this one here we can write 16 to 16 cancel out. So r1 left here, r1 square left here equal to your 9. So square we will take this side, then it will become under root only. So r1 equal to your under root here 9 and it will give us here 3 only. क्या देगा हमें, 3 देगा. Okay, so 3 how we can write beta 3, check your options. Now 3 is there. Now this one will be right option of this question. I hope you understood beta. Just numerical you are solving, read your this one statement properly. Okay, if you are not understanding one times, read it again 2 or 4 times, then first try to understand your statement properly, then to try to solve it. Okay, statement read करो, statement के बाद ये देखो कि क्या क्या आपको given है, जो given terms है और जो find करना है उनके बीच में relation क्या है, which formula you can apply for it. Clear? So this one is here 3 is right option. This one also 2023 last to last year question. Now next year question number 10. Now an electron experience of force, this one in electric field E. Then here electric field E is electric field आपको निकालना है. Then how you can find it? Electron experience of force. अब यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की. इलेक्ट्रॉन, ये ध्यान रखना बेटा, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल. ओके, और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल क्यों बता रही हूं मैं ये चीज, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है क्योंकि नेगेटिव जो चार्ज पार्टिकल होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में लगता है. ओके, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलता है, बट नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से अपोजिट चलता है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर एक्टिंग पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड चार्ज विल मूव अपोजिट. जो फोर्स लगाएगा वो अपोजिट लगाता है. सो कीप इन माइंड, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल अप्लाई
apply force in opposite direction of electric field. So keep in mind this one, your electron always, कोई भी negative charge, not only electron, any negative charge particle always it will apply force in opposite direction of the electric field. Okay, then here this one here, electron negatively charged particle apply force in a opposite direction of the electric field. जो चार negatively charged particle होते हैं वो हमेशा कहाँ चलते हैं, opposite direction में चलते हैं. जहां भी force लगेगा उससे opposite क्या होगा, negative charged particle force लगाता है. So here we have to find out electron experience of force आपको given है, कितना given है force, 1.6 into 10 raised to power minus 16 Newton force is given in electric field E. Then find this E we have to find out. Electron अब आपके पास क्या होगा, charge on electron. So charge on electron we know about is 1.6 into 10 raised to power minus 19. इनकी values बेटा आपको learn करनी पड़ेगी. Charge of electron, proton, neutron. So electron के ऊपर charge क्या होता है, 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb. तो charge का क्या होगा, electron का charge and force is this one. Then electric field we have to find out. So how we can find? First you should know about the relation between them. क्या रिलेशन होगा, E equal to your F upon Q. Clear? As you know relation between them, then only we can find their E. Okay, so force क्या हमारे पास 1.6 into 10 raised to power minus 16 divided by your charge on electron 1.6 into 10 raised to power minus 19. Clear? So 1.6 से 1.6 cancel out. So 19 से 16. How we can write there, 10 raised to power minus 3. Clear? This only came na, Newton per coulomb. Force Newton, charge coulomb, Newton per coulomb. Electric field क्या आ जाएगा ये? अब now check their option 1 also given in multiple. So nothing is there, then we can write there 1 into 10 raised to power minus 3. So 1 into 10 raised to power minus 3. Minus 3 na? Here all power are minus 3 beta, here mistakes, here 10 raised to power minus 3 anywhere we can write there. Okay, some problem is there. So 10 raised to power minus 3 will be there beta power, and here will be sign also will be negative. Here problem in these options, here also will be, this only we are correcting. First one, minus direction will be your negative. So answer will become your minus 1 into 10 raised to power minus 3 Newton per coulomb. I cap. Why we are writing? Because your force direction is given I cap. So force से क्या होगी, हमारी field की direction opposite रहेगी, because here we are talking about the electron. Electron की जगह proton होता, then it will be your positive. Electron is there, that's why here negative. Now see next question. Now two charge particles Q1 and Q2 are placed at the center of the spherical conducting cells of radius is given this one. दो चार्ज पार्टिकल है जिनके ऊपर चार्ज क्या गिवन है, Q1 और Q2, दोनों का क्या है, एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर कंडक्टिंग सेल ऑफ रेडियस R1 और R2, दोनों की रेडियस क्या गिवन है, R1 R2 गिवन है. तो सेल अरेंज सच दैट देयर सेंटर्स आर D. इस तरीके से अरेंज कर रखा है, दोनों के सेंटर क्या है, D डिस्टेंस पे, और D क्या आपका मोर देन योर R1 R2. मींस दोनों क्या है, दोनों जो चार्ज है वो एक दूसरे से बाहर रखे हुए हैं, ऐसा ही है. ये कह रहा है कि एक जो आपका स्फेरिकल सेल है जिसकी रेडियस क्या गिवन है, R1. सेकंड स्फेरिकल सेल हुज रेडियस इज R2. सेकंड स्फेरिकल सेल हुज रेडियस इज R2. क्लियर? रिस्पेक्टिवली देन सेल्स आर अरेंज्ड एट देयर सेंटर्स, दोनों के सेंटर क्या है, D डिस्टेंस पे गिवन, और D क्या है, मोर देन दिस वन टोटल डिस्टेंस इज D. देन आउटसाइड, देन फोर्स ऑन Q ड्यू टू Q1, फोर्स ऑन Q, लेट दिस वन योर Q1, सेकंड इज योर Q2. तो हमें फोर्स निकालना है Q1 Q2 की वजह से. सो दिस वन फोर्स वी कैन एज्यूम दिस वन एज अ पॉइंट चार्जेज, अब हमें पता है कि अगर पॉइंट चार्ज होंगे तो फोर्स हाउ वी कैन फाइंड देयर, बाय यूजिंग योर कूलम्ब्स लॉ ड्यू टू पॉइंट चार्ज.
And what is Coulomb's law? F equal to K Q1 Q2 by your R square. This one our Coulomb's law. By this one law we can find their force between the charged particle which are having some distance. Okay, so this one force, as you will compare this one with this one question options, then here we can write K, we can write there 1 by 4 pi epsilon naught, क्योंकि options में क्या given है K की value 1 by 4 pi epsilon naught की form में given है, that's why we can write this form only. Q1 Q2 divide by distance between them, and this distance is given here D only, so that's why which one we can write there E, just your right option out of these all four, because here distance is different given, but here D only distance given in the question, that's why your R will be equal to your D only. So first will be your right option. Okay, thank you for watching today our video. Then in next class we will do next remaining questions with this chapter. Thank you.